Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 7th Science NCERT book. The name of the chapter is, this is chapter number 11th and the name is Transportation in Animals and Plants. So children, before starting today's video, I must tell you all that what all things we have discussed in this chapter. So children, we have discussed about the introduction of this chapter, which says how the transportation is taking place, how the transportation of the material is taking place from one place to another place in the animals. Okay, we are talking about the animals first, then we'll be talking about the plants. So in the animals, as we all are the multicellular animals, the transportation also is a very complex process. So if the transportation is a complex process, we can understand that we have different specialized organs present in us. So we have specialized organs, and then these organs are going to help in in supplying the different sources of energy, different nutrients, different good materials, or any waste materials also could be placed from one place to another place. Okay, so for this we have the circulatory system and the excretory system. So children, we are discussing about the circulatory system, in which we saw about the blood and then about the blood vessels, and also we'll be seeing next topic would be the organs which are present along with the blood vessels. Okay, and we saw that blood is composed of different components, that is cellular component and the liquid component. The cellular component is also having the cells, which is the RBCs and the WBCs. The RBCs are going to be present in the animals, and if the animals are there, तो ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर जितने भी एनिमल्स के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, एनिमल्स के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं ब्लड के थ्रू. तो ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रेजेंट हैं. तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स आर द सेलुलर पार्ट, वेयर एज द प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द medium which is present in the blood, which makes it flow in the arteries and the veins. Okay, so next thing we saw about the arteries and the veins and the capillaries, which are collectively known as the blood vessels. So blood vessel is the it is the, you can say, connection of network of the vessels or the tube like structures which allow the current to flow through it. Now whenever it is allowing the current to flow through it means that कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, जब भी हमारा ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा. ब्लड एक जैसे करंट फ्लो करता है, मैं ये कहना चाहती थी यहाँ पर कि जब करंट फ्लो करता है तो एक ही वायर नहीं होता पूरे घर में. उसी तरह से जब ब्लड फ्लो करता है तो एक ही आर्टरी या एक ही वेन नहीं है पूरी बॉडी में. हमारी बहुत सारी आर्टरीज हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी वेन्स हैं जिनको कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज. तो अब अगर जब भी ब्लड फ्लो करेगा तो एक ही आर्टरी एक ही वेन में नहीं फ्लो करता है. ओके, so for this we have several arteries, we have several veins, and interconnections are also there, and these interconnections are the places for the exchange of gases, exchange of the good materials, exchange of the waste materials. Okay, so here it is known as the capillaries. So there are different functions of blood. We have already seen those functions, mainly to transport the things which is the good material as well as the waste products could be transported from one place to another place with the help of these arteries and the veins. Okay, now after that we saw about the activity of the pulse rate activity, where we have seen the pulse of the human beings, where we were talking about, we have taken out the values of the pulse rate in 1 minute. I mean the rate at which the throbbing action is seen and how many times that throbbing action is being seen in the arteries and the veins of your wrist in 1 minute, that is known as the pulse rate. ठीक है, पल्स का मतलब क्या है, जितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है उतनी बार हमको ये पल्स फील होती है. ओके, दैट इज नोन एज द थ्रॉबिंग एक्शन को ही हम पल्स कहते हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड. ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर है जो हमें सर्कुलेशन का और कुछ पार्ट्स पढ़ना है, जहाँ पर जो है हार्ट. ओके, सो विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स.
human heart. Okay, so we are considering the circulatory system, and this is the most important organ of your body, that is your heart. Without this we cannot pump the blood. Even the organs would not work in the absence of the heart. Okay, so heart is an organ. It is an organ which beats continuously to act as a pump for transporting the blood, which carries the substances from one place to another place. Okay, so who is going to take up the substances? Blood is going to take up, and whatever is and how the substances are being taken up by these arteries and the veins with the blood. It is taken because heart is pumping the blood throughout the body. Okay, it is going to pump the blood throughout the body. So what is the organ of heart? The heart is the organ which beats continuously, to act as a pump for transport of blood, which carries other substances with it. And here these substances could be the nutrient, the good substances, or it could be the waste material. All the substances could be taken together with this blood. ऑक्सीजन भी लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जाता है, ठीक है. इसी तरह से न्यूट्रिएंट भी लेके जाता है. ओके, सो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वही पूरे बॉडी में फ्लो करते हैं, और इसके वजह से जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है और जो ब्लड फ्लो करता है कंटिन्यूस तरीके से, उसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द सर्कुलेशन. ओके, दिस इज नोन एज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, दिस इज नोन एज द सर्कुलेशन. Circulation of blood. Got it? This is known as the circulation of blood. अब ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ये इसमें कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है हमारा लंग्स एंड हार्ट. एंड व्हाट इज बीइंग कैरीड? द ब्लड. Okay, so these are the three components of circulation of blood, because of which the blood is getting circulated. Okay, now we'll see how the heart is going to work and what are the parts which are present in the heart. So children, we'll be seeing the parts, the components of the circulatory system, that is the heart, because we have already seen about the respiration through lungs, and then we have also seen about the components of blood, its functions, and all other things related with it. Okay, so now we'll be moving on to the topic, that is the structure of heart. Okay, and we'll be considering the structure of the human beings, the structure of the heart of the human beings. So we'll study about the structure of human heart. Okay. So children, it consists of various parts. The human heart has, the heart is an organ which is beating continuously, and it is going to pump and transport the blood which is carrying the substances with it. And you have to imagine imagine the pump working for years without stopping. It is absolutely impossible for any machine to do such kind of pumping activity for such a long time. As since our birth till the death, our heart beats non-stop. It is working continuously.
Yet our heart works like a pump which is non-stop. And now let us see how the heart is going to pump the blood. The heart is located in the chest cavity with the lower tip slightly tilted towards left. इसलिए हम बोलते हैं the heart is towards the left because one of the tip, that is the lower tip, is going to be attached. It is bent towards the left. Okay, hold your fingers inwards in your palm, and then you can also what is the size of your heart? It is just as the size of your closed fist. You can close your fist and you can say the heart size is only this much big. Okay, our heart is this much big till it is of our fist. ठीक है, इतना छोटा हमारा हार्ट होता है. और ये सोचो, इस ऑर्गन से पूरे बॉडी में एट अ टाइम हमारे हेड से लेकर के हमारे टो तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है. ओके, सो वी शुड मेक आवर हार्ट healthy by eating and having healthy habits. Okay, so our heart is roughly the size of our closed fist. You have to what will happen if the blood is blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide is going to be mixed together. So once the blood is it is present as the pure blood and the impure blood is present. So you should know that pure blood is known as the oxygenated blood. Okay, and what about impure blood? Impure blood means it is deoxygenated blood. Okay, oxygenated blood means blood plus oxygen. Similarly, blood plus carbon dioxide is known as deoxygenated blood. Okay, so this is about the oxygenated blood and deoxygenated blood. Fine. Now what next we have to see? We have to see that to avoid the mixing, so this oxygenated and deoxygenated blood never mix. It is not going to mix, and if it is mixing, then what happens? The impure blood is going to be mixed with the pure blood. It makes the complete blood as impure blood. Okay, so it is going to cause a bad effect in our health. It is not going to take a proper carbon dioxide, it is not going to take a proper oxygen, so we will be facing certain health issues. Okay, there are 4 chambers in our heart. Okay, our heart has 4 chambers, and the upper 2 chambers are called atria and lower 2 are called ventricles. So heart is roughly equal to size of our fist. Okay, then second, it pumps blood for non-stop. Okay, third number, next step, it keeps pure and impure blood separately. ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड सेपरेटली. अब उसके बाद और भी चीज़ें हमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़नी है. कौन कौन से कितने चेंबर्स होते हैं? देयर आर 4 चेंबर्स. 4 chambers, upper 2 auricle, इसी को हम एट्रिया भी बोलते हैं, और सेकेंड लोअर 2 वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं. ओके, लोअर 2 are called ventricles.
अब पार्टीशन भी प्रेजेंट होता है, एक पार्टीशन इज प्रेजेंट, पार्टीशन इज प्रेजेंट टू सेपरेट प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इट इज गोइंग टू सेपरेट प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, फाइन, एंड दिस सेपरेशन इज नोन एज सेप्टम, दिस सेपरेशन इज नोन एज सेप्टम, ओके, दिस इज नोन एज सेप्टम, व्हाट इज इट नोन एज, दिस इज नोन एज सेप्टम, ठीक है। इसके बाद और क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, द पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन carbon dioxide. To understand the functioning of the circulatory system, first we should start from the right side of your heart and then follow the arrows which is going to give the direction of the circulation in the heart, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको चेम्बर्स समझने होंगे, कहाँ कहाँ कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और कहाँ ये एट्रिया प्रेजेंट है, किधर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, वी शुड ऑल नो दैट, ओके। सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम of human heart, okay। Then we have one septum is present, so this is the structure of heart. We can have different atrias are present, then we have ventricles are present. So this is how this is the structure of your heart, and what are the major the structure, the parts, and what we have to learn in this. So let us understand that how the heart is present and how the chambers are divided and how the blood is flowing through it, okay। So how this is flowing, अब इसमें देखना है आपको कि कौन कौन सा एट्रिया, कौन सा वेंट्रिकल, मैंने जो जो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए लिखी थी, लेट अस सी दैट, ओके। सो हियर वी हैव द एट्रियाज, हियर दिस इज नोन एज वेंट्रिकल्स, okay। So let us understand the structure of heart here itself. I'll just write down the labelings and I'll explain you the parts. So we have 4 chambers. Where are the 4 chambers? First, second, third and fourth, okay। The upper 2 chambers are known as atria, lower 2 chambers are known as ventricles. Now atria and ventricles are separated by a muscular wall and this wall is known as septum, okay। This is going to separate the oxygenated blood from deoxygenated blood, okay। So we have oxygenated blood and deoxygenated blood, fine। Now what happens, a complete heart is encircled inside a membrane which is known as pleural membrane, this is known as pericardium,
Okay, this is known as pericardium, and this membrane is known as, sometimes it is known as pericardial membrane. Okay, it is known as pericardial membrane. We have valves in it. ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे कुछ lids होती हैं. इन lids को हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं valves. There could be the name of the names of these valves are different in its nature. The names are tricuspid valve and bicuspid valve. We have the left side, we have left side and right side of the heart. So in the left side we have the pure blood is present, and here impure blood is present. And you can see in your book it is also drawn that on the left side the pure blood is present and the right side we have impure blood. ओके, अब क्या करना है इसमें, मैंने आपको बता दिया वेंट्रिकल्स, एट्रिया और बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी. पल्मोनरी आर्टरी कौन सी, पल्मोनरी वेन कौन सी, यहीं पर समझते हैं. एंड द बिग आर्टरीज आर नोन एज आयोटा. आयोटा, दीज आर द बिग ब्लड वेसल्स. खूब बड़ी चौड़ी ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं आयोटा. ठीक है, अब इसके बाद वी हैव पल्मोनरी आर्टरी. Pulmonary artery is this one. This is pulmonary artery. Okay, and we have one more. We have small veins, and these two veins are called pulmonary veins. Pulmonary veins. Okay, now what is the function of pulmonary artery and pulmonary vein? Pulmonary artery and veins, actually you know that arteries are the blood vessels which always carry pure blood, whereas veins are those blood vessels which are carrying the impure blood. तो यहाँ हार्ट में हमारे एक्सेप्शन होता है, मतलब कि और जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनसे अलग फंक्शन है. क्या अलग फंक्शन है? जस्ट रिवर्स हो जाता है. जो पल्मोनरी आर्टरी है, arteries always carry pure blood except pulmonary artery. तो pulmonary artery है, it is always carrying the impure blood. Okay, so understand that impure blood, it always carry impure blood, whereas pulmonary vein will always carry the pure blood. It always carry the pure blood. Please understand that it always carry the प्योर ब्लड. ठीक है, तो प्योर ब्लड के लिए यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का मूवमेंट होता है. तो प्योर ब्लड हमेशा पल्मोनरी आर्टरी से बहेगा, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी से क्यों बहता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केसेस है, एक बिल्कुल अलग केस है. नॉर्मली आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड लेकर के जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो इम्प्योर ब्लड लेकर के हमारे ऑर्गन्स हमारे हार्ट में आती है. दिस इज प्रेजेंट इन द हार्ट. ओके, सो प्लीज रिमेंबर देयर इज ओनली वन एक्सेप्शनल कंडीशन इन द हार्ट. अब इसके बाद हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी है जो हार्ट के सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करेगा. तो हार्ट का सर्कुलेशन क्या होता है? वी हैव टू सी द एरोज which is drawn in the book. Actually there are no arrows which are drawn in the book. I'll just tell you that the heart is going to pump the blood into the lungs, and then it is getting purified, again coming back to heart, and then again it is being pumped into the body, and from the body again it comes to the heart, फिर lungs में जाता है purification के लिए. प्योर ब्लड दोबारा से हार्ट में आता है और फिर पूरी बॉडी में घूम चला जाएगा. जब पूरी बॉडी में जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड, इट बिकम्स इम्प्योर. ठीक है, तो कैसे होता है? लेट अस सी. दीज टू आर द एट्रिया. एट्रिया कंप्लीटली फिल हो जाते हैं. यहाँ पर भी ट्राइकस्पिड, यहाँ पर भी वैल्व्स प्रेजेंट हैं. हर जगह में सेमील्यूनर वॉल्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं. ये जो वैल्व्स हैं ये ब्लड बहेगा और कहाँ आ जाएगा? हमारे एट्रिया में और वेंट्रिकल में भर जाता है. ओके, इट इज गेटिंग फिल्ड. अब इसमें जब दोनों एट्रिया से भर जाएगा, उसके बाद जैसे ही ये पूरा भर जाता है एट्रिया में, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में चला आता है. ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ भर जाते हैं. अब ये दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी से जिधर इम्प्योर ब्लड है वो चला जाएगा, और हमारे पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और इधर से जो जो प्योर ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाएगा मूव करने के लिए, जिसकी वजह से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और उसके बाद फिर वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके आता जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मूवमेंट, हाउ द ब्लड इज गेटिंग, इट इज गोइंग टू फ्लो and how the pumping is going to take place. Actually, these atrias and the ventricles, they work together. Atrias are going to they are going to be filled, then they contract. Ventricles filled. Ventricles, once they are completely filled, they will contract. From one side, it is going into the body, and from the other side, the blood is going into the lungs so that it gets purified. फिर दोबारा से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से हमारे हार्ट में आता है और दोनों एट्रियाज भर जाते हैं। एट्रियाज भर जाएंगे, एक तरफ इम्प्योर ब्लड भर जाता है, एक तरफ प्योर ब्लड भर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर दिस इज हैविंग the left side of the left ventricle and right ventricle. Left side is having the pure blood and right side is having the impure blood. Got it? So this is what is about the complete structure of your heart, okay, with the circulation I have told you. Fine, we'll be seeing, we have also seen the video related to this, and I'll be showing you some more topics which is related with this heart. You can practice drawing the diagram because this is a tough diagram which there is sometimes what happens children who are not able to draw. You can draw these diagrams properly, okay, and you can practice it number of times. तो यहाँ पर सारे चीज़ों का, सारे स्ट्रक्चर का मैंने फंक्शन बता दिया आपको, और जो पेरिकार्डियम होता है मैंने कहा था प्रोटेक्शन के लिए है। सेप्टम क्या काम करता है, सेप्टम से प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों ही सेपरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड द फंक्शन ऑफ द ट्राइकस्पिड, मतलब वैल्व्स का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैल्व्स। Function of valves. What is the function of valves? But the function of valves is to stop backflow of blood. Okay. Then second is stop the backflow of the blood. Then septum का function क्या है? To separate pure and impure blood, ठीक है, to separate pure and impure blood. Then next is septum के बाद पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन है? It is a space where heart lie, heart is present. Okay, the next is pericardial membrane. Pericardial membrane helps in protecting the हार्ट, ठीक है। कोई भी शॉक लगे या किसी भी चीज़ों की वजह से ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट और क्या बचता है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या काम करती है? पल्मोनरी आर्टरी इट ब्रिंग्स impure blood towards heart, ठीक है, and it brings pure blood towards heart, takes up pure blood from the heart towards the body cells, ठीक है।
तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे। और कितना बड़ा हमारा हार्ट है हमने बताया आपको भी, इट इज़ ओनली बिग टिल आवर फिस्ट। ओके, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स का फंक्शन आपको पता है। ऑरिकल्स आर गोइंग टू fill the blood and then it is going to be pumped with the help of the ventricles. Got it? Paheli wondered that which side of the blood is having oxygen rich blood and which side is having the carbon rich blood. So I have told you that left side it is having the pure blood which is red in color, it is shown here, and then impure blood is shown with the blue color. So please remember that our blood is neither blue, it is red in color. Please remember that it is not with any other color, it is only red in color, whether it is pure or impure. Just to tell that the blood is impure, here in the book it is drawn in the form of the blue color. Got it? So children, this was all about the video which is related to the structure of heart and the function of your heart. What is the function? Function of the heart is to carry the blood from to different body organs, and if the blood is not going to be carried, no important functions, no important components would be carried to the different organs of your body. Okay, so please remember that you all have to study about the function of your heart, and then what is the function of the blood. Okay children, so this was all about today's video. I will be meeting you all in the next class and I will be telling you something more about the chapter. Okay, so this was all about today's video. I will be meeting you all in the next class.